So, hello students, it's me नील घोष, your IC class 11 and 12 tutor. Welcome to my channel. आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आप देख सकते हैं चैप्टर 4 ऑफ जियोग्राफी, that is the drainage system. So, if someone is new to my channel and you haven't subscribed yet, then please do for more further updates related to ISC class 11 and 12. And बहुत ही कुछ दिन पहले इन आई थिंक 17 फरवरी जियोग्राफी एग्ज़ाम हुआ. बट दिस इज़ कुछ तो मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि कुछ तो मेरे वीडियो से जो प्री रिकॉर्डेड था जो इस साल के क्लास 12 के जियोग्राफी स्टूडेंट्स ने यूज़ किया. पर ये जो मैंने फर्दर वीडियो बनाने का डिसीजन लिया, दिस विल बी फॉर ISC 2024, 2025 and rest of them. So history exam is on 10th March 2023, so I will try to cover most of the part before 10th March so that you can access all of my videos and use it for helpful purpose. That's all for. So the first topic we're going to cover today is the evolution of the Indian river system. India is blessed with hundreds of large and small rivers which drain the length and breadth of the country. So the river constitute an important natural resource and form the lifelines of the Indian masses. So it's page number 45, you can open to it and let's begin with our task. तो यहाँ पर ना डेट थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो डेट हम थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं. Now it's okay. The drainage pattern of India is influenced by relief of land. Evolution of the Indian river system. Indian river system मतलब उसका evolution कैसे हुआ? By the two great river system, that is the Himalayan river and the Peninsular rivers. The Himalayan rivers. The major rivers of the Himalayas, Indus, Ganga, Brahmaputra, origin from the southern slopes of the Tibetan highland. कहाँ से वो origin होता है, मतलब कहाँ से उसका शुरुआत होता है? Southern slopes of the Tibetan highland. They flow first parallel to the mountain ranges and then take sudden bend. मतलब पहले तो वो सीधा सीधा mountain ranges की तरह flow होते हैं, फिर they take a sudden bend towards the cutting deep narrow valley in the Himalayan ranges. The gorges of the Indus, Satluj, Alaknanda. यही है कुछ जॉर्जेस, या फिर बोल सकते हैं ये कुछ कटिंग वैलीज है. Gandak, Kosi, Brahmaputra clearly indicate that this river existed even far before the Himalayan ranges was been formed. ये rivers Himalayan ranges form होने के पहले से ही था. This river continued to flow by cutting mountain ranges as this range rose, leading to a formation of deep gorges. मतलब deep gorges मतलब क्या, narrow valley लेकिन बहुत deep है. Himalayan rivers are typical example of antecedent drainage. What is antecedent drainage? River that flow in their own path although there is ups and down. मतलब अपने path में flow करना although there is an ups and down, इसको बोलते हैं antecedent drainage. The Indo-Brahma theory. It is the very important theory. What is Indo-Brahma theory? According to the geologists, Shivalik hills run parallel to the main Himalayan ranges and are formed of alluvial deposits. According to geologists क्या मानते हैं? Shivalik hills runs parallel to the main Himalayan range but are formed, लेकिन ये तैयार कैसे हुआ? By alluvial deposits of sand, clays, boulder, conglomerates, etc. These deposits were laid down by a mighty stream which flowed from Assam to Punjab and even beyond up to Sindh. These deposits were laid down by a mighty stream. What is the meaning of that? That this stream has been flowed from Assam to Punjab and even beyond up to Sindh. Assam to Punjab, it has been flowed and up to Sindh. It's finally emptied itself with a gulf which occupies the part of Sindh and Lower Punjab in the Miocene period. What is Miocene period? The geological era. And from there, the three main rivers combined with the flow, क्या है? Indus, Ganga and Brahmaputra. Indus, the Shivalik river, they carried out the combined flow of the three main rivers, Indus, the Ganga, the Brahmaputra. So, what are the following systems and subsystems under this? The Indus, the five tributaries of the Indus in Punjab, the Ganga and its Himalayan tributaries, and the stretch of Brahmaputra in Assam and its Himalayan tributaries. The dismemberment was the result of the following two events. क्या दो event हुआ था?
जो इन सब सिस्टम और सब सिस्टम के अंदर क्या क्या इवेंट हुआ था. अपहीवल्स मतलब डिसरप्शन इन द वेस्टर्न हिमालयज इंक्लूडिंग द पोटवर प्लेटू इन द प्लाइस्टोसिन मतलब जियोलॉजिकल एज में जो डिसरप्शन हुआ था. हेडवर्ड इरोशन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडो-ब्रह्मा रिवर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेडवर्ड इरोशन? इन द रीजन ऑफ इरोशन. As a result, the Indus and its tributaries, Ganga and its tributaries, Brahmaputra and its tributaries came into being. ऐसे उन लोग इस रिवर्स का origin हुआ मतलब they were formed. That the Yamuna was the first tributary of the Indus. Yamuna was the first tributary of the Indus. Ganga, then it became Ganga, and later on its tributary, it became the tributary. मतलब फिर वो गंगा में आए, गंगा से मिले कौन? यमुना. फिर that it became the tributary of Ganga. However, this theory can be challenged on the following grounds. Indo-Brahma theory can be challenged on some of the following grounds, which we can consider as drawbacks also. What are the drawbacks? It is not necessary to imagine a stream of the size of Indo-Brahma flowing all the length of the Himalayas to explain the occurrence of the Shivalik deposits. मतलब यहाँ पर कहा गया है कि it is not necessary, ये necessary नहीं है imagine करना कि there was a stream, एक stream था of the size of Indo-Brahma के size की तरह, and all along the length of the Himalayas to explain the occurrence of the Shivalik. And क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि it's not necessary, ये necessary नहीं है imagine करना Indo-Brahma का size which flow along the length of the Himalayas and to explain the occurrence of the Shivalik deposits. Shivalik deposits कैसे occur हुआ वो भी explain करना, it's not necessary. The evidence furnished provide what is needed especially. Furnished मतलब जो necessary evidence provide किया what is needed, it's ये किया गया था. By the dispositional history in the Ganga Delta and in the Assam does not fit well with the concept of Indo-Brahma system. In the Ganga Delta and in the Assam does not fit well. वो अच्छी तरह से मतलब वो थ्योरी फिट नहीं हो पा रहा था जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो-ब्रह्मा स्ट्रीम. द गैप बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द शिलोंग प्लेटू हैज बीन फिल्ड बाय अ वेरी थिक मैंटल मीन्स सॉलिड बल्क ऑफ इंटीरियर ऑफ alluvium. There was a large deposits of quantity of alluvium which should be much longer than the suggested Indo-Brahma theory. वहाँ पर बहुत ज़्यादा alluvium का स्तर होना चाहिए था जो कि Indo-Brahma theory में एक्सप्लेन किया गया था उससे भी ज़्यादा. The evidence of the Tipam sandstones of Assam which were deposited in the estuary situated so close to the source of the Indo-Brahma also speak against the theory. The evidence जो था Tipam sandstone of Assam में which were deposited in the estuary situated, जो estuary situated था उसमें जो deposition किया गया था according to Indo-Brahma theory which was so close to the source of Indo-Brahma, but this also speaks against the theory. What is the peninsular rivers? The broad, graded and shallow valleys of the peninsular rivers indicate that these rivers existed much before the Himalayan rivers came into being. मतलब peninsular river Himalayan river से भी पहले आया था. This river acquired maturity and do almost lateral cutting instead of vertical cutting. Vertical cutting की जगह ये lateral cutting कर रहा था मतलब inside the mountains to flow. From east to west दो river हैं जो flow करते हैं नर्मदा and तापी, which we know. These two rivers flow in troughs which do not form by them. The Western Ghats used to form original watershed. Western Ghat ही original watershed form करता था in that time. Due to some emergence of western flank of the peninsular block, the general symmetry of the peninsular river was disturbed. Submergence के लिए कुछ submergence के issue के लिए western flank में peninsular block में the general symmetry of the peninsular river disturb हो गया था. General symmetry मतलब general जो pattern है peninsular river का वो disturb हो गया. The second distortion took place at the time of formation of the Himalayan rivers. Second distortion कब हुआ या disruption बोल सकते हम at the time of formation of Himalayan rivers when the northern flank of the peninsular block suffered subsidence and consequently trough faulting took place. मतलब क्या Himalayan rivers जब form हुआ तब भी एक disruption हुआ था when the northern flank of the peninsular block suffered and subsidence. मतलब एक subsidence का एक हम दूसरा नाम देकर बोल सकते हैं collapse. जब collapse हुआ था तो peninsular block suffered a collapse and consequently
ट्रफ मतलब चैनल फॉल्टिंग टू प्लेस, मतलब फॉल्टिंग जो हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ. नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द सच चैनल एंड रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रेनेज. मतलब नर्मदा एंड तापी उन ट्रफ में, उन चैनल्स में भी फ्लो करता था, इसलिए इनको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज. There are two broadly parts of drainage system of India, that is the Himalayan rivers and the Peninsular rivers. The Himalayan rivers, under Himalayan rivers comes the Indus, Ganga and the Brahmaputra drainage system. What is the Indus drainage system? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडस ड्रेनेज सिस्टम का कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है. वो तो फिर बाद में यमुना हुआ, लेकिन इट डोंट हैव एन इनिशियल ट्रिब्यूटरी. द इंडस इज ऑल्सो नेम्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान. ये कुछ मैं टॉपिक आपको मतलब कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ शुरू करने से पहले. इंडस का पार्ट, इंडस रिवर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान. द इंडस रिवर इन टिबेट, কোনো অসুবিধা নেই আমার. The Indus River in Tibet at an altitude of 5,880 meters near Mansarovar Lake. Where does this flows from? It flows from west to northwestwards, and then it enters in the Indian territory of Ladakh. This river forming a spectacular gorge. Spectacular gorge means like a eye-shaped river. In this reach peers of the Kailash range several times. मतलब ये जो जर्नी है, मतलब from the mountains it moves through the Kailash range many times. It also flows through Ladakh, Baltistan and Gilgit to finally emerge out at the hills of Atok. Indus is considered to be one of the largest rivers of the world. And there was a treaty signed with Indus, is that Indus Water Treaty, that was signed with Pakistan, as it is also named as the lifeline of Pakistan. So in case of Jhelum, it rises from a spring at Verinak, situated in the southern eastern part of the valley of Kashmir. It flows northwards from its source to Ular Lake and further down southwestwards until it enters a gorge cut by this river in the Pirpanjal range. तो ये जो कहाँ तक कहाँ से फ्लो करता है, कहाँ पर लोकेशन क्या है, तो ये सब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम हियर इन केस ऑफ रिवर सिस्टम. The Jhelum is also been found between the Muzaffarabad and Mangla. It runs roughly along Indo-Pakistan border. सो वेयर डज इट जॉइन? चेनाब फिर कहाँ जॉइन होता है? चेनाब फिर झीलम फिर चेनाब में जॉइन होता है नियर झंग इन पाकिस्तान. द चेनाब रिवर, द चेनाब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज नोन एज चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश. चेनाब वॉज पॉपुलरली नोन एज इन जम्मू एंड कश्मीर, बट इन हिमाचल प्रदेश इसको क्या कहा जाता है? चंद्रभागा. चंद्रभागा ऑल्सो फ्लोज नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड रन पैरेलल टू द पीरपंजल रेंज टू सम डिस्टेंस. पीरपंजल रेंज तक चलता है टू सम डिस्टेंस. Near Kishtwar, it cuts a deep gorge, means deep valley-like places in the Pirpanjal range and turns southwestward and flow in the direction for a short distance. कुछ समय के लिए वो southwards flow करते हैं. The Ravi, the source of the river, lies near the Rohtang Pass. Where does the source of the river lies? It lies near the Rohtang Pass. It flows from the north westwards. मतलब जो रवि है वो कितना से शुरू होता है? इंडस, फिर झीलम, फिर चेनाब, फिर रवि. रवि फ्लो होता है नॉर्थ वेस्ट इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीरपंजल रेंज एंड द दाउलदर रेंज. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है. नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होकर इट मूव्स थ्रू द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ द पीरपंजल रेंज ऑफ इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट एंड देन इट जॉइंस द दाउलदर रेंज. Some distance below Chamba, it also turn to the southwest, cuts a deep gorge. Gorge का मतलब है वैली, ऐसे आप समझ सकते हैं. In the Dauladar range and enters the Punjab plain near Madhopur. It also flows to Pakistan. मतलब ये सब रिवर पाकिस्तान में क्यों फ्लो होता है? क्योंकि जो मैप ऑफ इंडिया है, अकॉर्डिंग टू दैट all these rivers under the Indus drainage system, it was interconnected before the Indian independence, which was been मतलब इंडिपेंडेंस से पहले तो इंडिया का पूरा टेरिटरी पाकिस्तान इंक्लूडेड था, इसलिए तो रिवर तो बॉर्डर से अलग नहीं हो सकता ना, इसलिए वो सब पाकिस्तान से फ्लो करते हैं. सो एट द लास्ट वी मूव टू द बीस. इट ऑरिजिनेट फ्रॉम अ प्लेस नोन एज बीसकुंद. वेयर इज बीसकुंद? नियर द रोहतांग पास. इन इट्स अर्ली स्टेज इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन फ्रॉम मनाली टू कुल्लू, वेयर इट्स वैली इज पॉपुलरली नोन एज कुल्लू वैली. कुल्लू वैली, इसको कुल्लू वैली से जाना जाता है. कहाँ पर? इन
Manali, and Kulu, where its valley is known as popularly as Kulu Valley. And the last is the Satluj River. It's the very famous river. It originates from the Rakas Lake, which is situated at some meters of altitude, that is I think 4000 meters at in Tibet. Tibet इंडिया के थिक बॉर्डर, मतलब चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में पड़ता है टिबेट. दिस लेक इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ मानसरोवर लेक बाय स्ट्रीम. पहले ये नॉर्थ वेस्टवर्ड फ्लो करता है, फिर ये हिमाचल प्रदेश में जब एंटर करता है थ्रू विच प्लेसेस थ्रू द शिपकिला पास. Before entering the Punjab plains, it cuts a deep gorge, means deep valley, where the Bhakra Dam has been constructed. तो भकरा डैम कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था? Over Satluj River. So moving on to the next drainage system, and one of the most popular one is the Ganga drainage system. It also has no such tributary rather than Yamuna and Gomti. Means it don't have directly any tributary, but it has left and right bank tributaries as Yamuna, Gomti, Ghagra, Gandak, Ramganga, Mahaganga and Kosi. All of these rivers are originate in the Himalayas. So where does the Ganga originate and rises? The Ganga rises in the Garhwal Himalayas in Uttaranchal at an altitude of 6000 and above meters. This river was named after its head streams Alaknanda and Bhagirathi. Alaknanda and Bhagirathi are the most popular and most main streams of the river Ganga, which flows near Devaprayag. जब ये वेस्ट साउथवर्ड्स फ्लो करता है फ्रॉम गंगा डिबाउचेस फ्रॉम द हिल नियर हरिद्वार. जब ये वेस्ट साउथवर्ड्स फ्लो करते हैं, गंगा ओपन्स अप इन अ एरिया नियर द हिल्स ऑफ हरिद्वार. डिबाउचेस का मतलब है opens up in some area. Beyond Farakka in West Bengal, it flows eastward. ये जो डायरेक्शन है ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, इन विच लोकेशन. It flows eastward into Bangladesh, where it is also known as Padma. So before falling into the Bay of Bengal, the Padma receives the Brahmaputra, which is known as Jamuna and Meghna here. The Yamuna is the right bank tributary of Ganga. ये हम सब जानते हैं. And it rises from the Yamunotri glacier, which was at 3965 meter. After cutting a deep valley-like area across the lesser Himalayas, it flows near southwest and enters Ganga plain near Tejawala. It flows towards the south up to Agra and further down to southeast direction till it joins Ganga at Prayagraj. Where does the Ghagra flows? The Ghagra is the head water in the Karnali. It is often of trans-Himalayan origin and crosses the western part of the Nepal Himalayas through a deep and narrow valleys like places. घाघरा जो है ये है ट्रांस हिमालयन ऑरिजिन जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नेपाल हिमालयस में क्रॉस होता है थ्रू द डीप एंड नैरो वैली लाइक प्लेसेस. द गंडक it rises near Sino-Nepal boundary and it drains to the central part of the Nepal. After entering the Champaran district of Bihar, it turns to the southeast and joins to the left bank of Ganga at Sonpur. And the last river of the Ganga drainage system is the Kosi River. It drains from Nepal and enters Saharsa district of Bihar in the numerous channels. This river is notorious for shifting its course, depositing silt and causing flood. So the next is the Brahmaputra drainage system. It originates from Chamayandung glacier located in 100 km southeast of Mansarovar Lake. Mansarovar Lake के southeast में located है. चौबीस देश है. So now the peninsular rivers. The main rivers of the peninsular plateau originate from the Western Ghat and flow in a west-east direction to join the Bay of Bengal. Bay of Bengal join करने के लिए कहाँ से originate होता है? peninsular जो rivers है, peninsular plateau के जो rivers है वो originate होता है Western Ghat से and flow in the west-east direction. The important rivers are Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, the famous rivers. The Narmada and Tapi are the two exceptions which flow in the Rift Valley in east-west direction to join the Gulf of Khambat.
ये दो जो रिवर है ये फ्लो करते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गल्फ ऑफ खंबर ज्वाइन करने के लिए। रिवर्स फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल आर महानदी। द महानदी हैज़ इट सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ फुट हिल्स ऑफ दंडकर्ण दंडकर्णिया नियर शिवावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू द बे ऑफ बंगाल। मतलब ये जो प्लेसेस है, लोकेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है। फ्रॉम नॉर्दर्न फुट हिल्स टू शिवाहा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टू जॉइन द थ्रू उड़ीसा टू जॉइन द बे ऑफ बंगाल। It is shared by Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Bihar and Maharashtra. The length of the river is 857 kilometers and some of its left bank tributary are Hasdo, Mand and right bank tributaries are Ung, Tel. The Godavari is the largest among the peninsular rivers. Godavari सबसे बड़ा है. It rises in Nasik district of Maharashtra and joins the Bay of Bengal in Andhra Pradesh. Its total length is 1465 kilometers. गोदावरी इज ऑफन रेफर टू एज वृद्धागंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों वृद्धागंगा और दक्षिणा गंगा? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंट इट इज नेम एज द वृद्धागंगा और दक्षिणा गंगा। देयर आर सम प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज आर प्रवरा, पूर्णा, मंजरा एट्सेट्रा। और सबसे लार्जेस्ट क्या है? वाइंगंगा, मंजरा, पेनगंगा। द कृष्णा राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर के उधर से एक स्प्रिंग से कृष्णा राइज हुआ। इस टोटल लेंथ इज 1400 किलोमीटर्स। इट इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर कोयना, मलप्रथा, भीमा एट्सेट्रा। द कावेरी राइजिंग इन द ब्राह्मीगढ़ रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। ब्राह्मीगढ़ रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट में कावेरी का ऑरिजिनेशन हुआ और वहाँ से राइज हुआ। कावेरी फ्लोज 800 किलोमीटर टू जॉइन द बे ऑफ बंगाल नियर कविरापितम। इट इज ड्रेन बाय केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इन समर इट रिसीव्स वाटर। कहाँ से वाटर रिसीव करता है कावेरी? समर में फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द अरेबियन सी एंड इन विंटर इट रिसीव्स फ्रॉम द रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून एट द अरेबियन सी और विंटर में नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। इट इज़ अ पेरिनियल रिवर ऑल्सो, जो पूरे ईयर पानी से भरा हुआ रहता है। सम ऑफ इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज काबिनी, सुवर्णवती, भवानी एंड हेरंगी, हेमावती etc. are the left bank tributary. The Subarnarekha and the Brahmani. The Subarnarekha and the Brahmani are interposed between Ganga and Mahanadi deltas. ये दोनों interposed है, ये दो deltas के बीच में। It shares streams through the states of Jharkhand, Odisha, Bengal, etc. The Brahmani is known as South Quail in upper reaches in Jharkhand. मतलब upper areas में झारखंड में इसको South Quail से भी जाना जाता है। River flowing into the Arabian Sea. क्या क्या river Arabian Sea में flow करते हैं? The Narmada, Tapi, the Sabarmati and the Mahi, the Chambal, the Sindh, the Betwa, the Ken and the Son. बहुत famous river है the Chambal। बस क्या क्या फ्लो रिवर क्या क्या कौन सा रिवर फ्लो करता है इनटू द अरेबियन सी? द नर्मदा। द नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। इट फ्लोज वेस्टवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर्स टू फाइनली एम्प्टी इटसेल्फ इन द अरेबियन सी बिलो द ब्रोच। मतलब ये वेस्टवर्ड फ्लो करता है कुछ डिस्टेंस के लिए एटलीस्ट 1300 किलोमीटर्स। फाइनली ये अपने आप को एम्प्टी कर देता है अरेबियन सी में, पूरा खुल देता है एक लॉन्गर लेवल पे। इसका 1/10 का नर्मदा का 1/10 पार्ट गुजरात में भी बहता है एंड मोस्टली कन्फाइंड टू मध्य प्रदेश ओनली। सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी इट्स लैक इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रिब्यूटरी। इसका ट्रिब्यूटरी बहुत कम है। और इसका वेल नोन क्या है? मार्बल रॉक्स, बहुत जाना पहचाना एक नाम है नर्मदा का। द तापी राइजिंग इन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश फ्लोज वेस्टवर्ड फॉर 724 किलोमीटर्स इन अ ट्रफ मोर देन और पैरेलल टू द नर्मदा रिवर। मतलब नर्मदा रिवर की तरह ही बहुत ट्रफ और क्रेस्ट के थ्रू वो फ्लो करता है। ये भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ, बेतुल डिस्ट्रिक्ट से, एंड ये वेस्टवर्ड फ्लो करता है 724 किलोमीटर पैरेलल टू द नर्मदा। देयर आर सम कैचमेंट एरियाज जहाँ पर अच्छे फिश मिलते हैं, अच्छे फिशिंग साइट्स है। It extends from Madhya Pradesh to Maharashtra, Gujarat, etc. Tapi is joined by some of the rivers on the left bank and right bank tributary. Purna, Vegar और right bank पे क्या है? अनेर, वो सब लेफ्ट बैंक में था। So moving on to the next is the Sabarmati and the Mahi. मज़े से आपको पढ़ना है। देखिए, पढ़ाई तो होगी लेकिन आपको मज़े से पढ़ना है, क्योंकि हमको जानना है। क्या जानना है? हिस्ट्री के बारे
जियोग्राफी के बारे में जानना है, इंडिया के जियोग्राफी बारे में जानना है, वी हैव टू नो द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द डिफरेंट रिवर्स. It will diversely increase our intelligence and diversely increase our knowledge for the country of India and the world. So मजे से पढ़ना है कि जानना है हमको कैसे कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो करता है, कहाँ पर क्या सिचुएटेड है, जानना तो ज़रूरी है ना. तो आपको ऐसे मज़े लेकर ऐसे समझ कर पढ़ना है, तभी तो एनर्जी आएगा, तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा. द साबरमती इट फ्लोज नहीं कहूँगा, ये ड्रेन कहाँ से होता है, मतलब फ्लो और ड्रेन नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द प्लेटू बाय द साबरमती एंड द माही. साबरमती राइजेस इन अरावली हिल्स में इसका ओरिजिनेशन हुआ, राइज हुआ, एंड फ्लो कहाँ से करता है, साउथ वेस्टवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर. जब जाकर 300 किलोमीटर जाकर वो अरेबियन सी में मिक्सअप होता है. The Chambal, the Sindh, the Betwa, the Kind, the Son. This river originate from the northern flank of the Peninsular Plateau. Northern side से ये originate हुआ Peninsular Plateau के, and join the Ganga river system in the northern plains. Ganga river system को join होता है कहाँ पर, northern plains में. The Chambal rises near Mho in the Vidya range and flow towards north generally in a gorge up to Kota. कोटा का नाम सुना है, एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत फेमस है, जेई नीट. तो वहाँ पर एक जॉर्ज, एक कट वैली की तरफ उतना तक फ्लो होता है नॉर्थवर्ड्स. कौन, चंबल. इन द इट ऑल्सो टर्न्स इन द ईस्ट एंड रन्स पैरेलल टू द यमुना से भी ये पैरेलल होता है कुछ समय जाकर. दिस रिवर फ्लो मच बिलो इट्स बैंक्स ड्यू टू द सीवर इरोशन के लिए ये बहुत लो एरिया से फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ पोर रेनफॉल, न्यूमरस डीप रवाइंस मीन्स न्यूमरस डीप जॉर्ज और कट्स, एंड हैव बीन फॉर्म्ड इन द चंबल वैली गिविंग अ राइज टू बैडलैंड्स और बैडलैंड टोपोग्राफी. बैडलैंड्स और बैडलैंड टोपोग्राफी मतलब बैडलैंड्स क्रिएट होता है कि जहाँ पर अच्छे से कल्टिवेशन नहीं हो सकता, साइट्स नहीं अच्छा फॉर फिशिंग, ऑल ऑफ दैट इंक्लूड्स बैडलैंड और बैडलैंड टोपोग्राफी. द टर्म बैडलैंड इज अप्लाइड टू एनी सच इरोशनल लैंडस्केप जहाँ पर इरोशन हुआ, वेयर अ मेज of ravines, where a puzzle of George, where a puzzle of cuts and valleys dissects the plateau surfaces. जो कट होता है ना वही तो डाइसेक्ट करता है प्लेटू के सरफेस को, वही बताएगा यहाँ पर. The Sindh, the Betwa and the Kin flowing towards the north have also deep cut gorges, deep cut edges at some places like Chambal, at numerous ravines of the alluvial plain of the Ganga. The Son originates from the Amarkantak plateau. Son कहाँ से originate होता है, Amarkantak plateau. What is the difference? Now moving on to the last part, the difference between the Himalayan and the Peninsular river system. So यहाँ पर आपको पेज नंबर 52 में क्लियरली एक डिफरेंस दिया हुआ है, वही हम पढ़ेंगे. द हिमालयन रिवर सिस्टम. तो हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया. इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन रिवर सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये अब हम पढ़ेंगे. Some of the longest rivers belong to Himalayan river system. Peninsular are not long as compared to the Himalayan range. The catchment areas and basins of the Himalayan rivers are very large. The catchment areas and the basins of the Peninsular river are not as very large as compared to Himalayan rivers. The Himalayan rivers are larger in number. The Peninsular rivers are comparatively smaller in number than the Himalayan river system. The Himalayan rivers originate from the snow-covered areas and receive water from the rainfall as well from snow melt. Therefore, they are perennial. मतलब हिमालयन जो रेंज है, हिमालय को हम कैसे जानते हैं, देखिए जो माउंटेन्स है हिमालय का वहाँ पर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, तो समर में वो सब गलता है, मतलब दोज आर मेल्टिंग एंड फॉर्मिंग एंड फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर्स. तो इसलिए जो हिमालयन रिवर्स है वो लगभग पूरे साल ऑलमोस्ट द ईयर इट वॉज पेरिनल, मतलब फ्लो होता ही रहता है रिवर कोई ना कोई. बट इन केस ऑफ पेनिनसुलर रिवर फ्लो इट डिपेंड एंटायरली अपॉन द रेन वाटर एंड सीजनल. मतलब सीजन आएगा रेन का तब वो रिवर अच्छे से फ्लो में चलेगा, उसका रिवर का डेंसिटी इंक्रीज होगा. बट हिमालयन में ऐसा नहीं है, पूरे साल ही फ्लो करता है रिवर, ऑलमोस्ट द एवरी ईयर, एवरी टाइम. द हिमालयन रिवर्स फॉर्म डीप जॉर्जेस, डीप कट्स. द पेनिनसुलर रिवर फ्लोज इन शैलो वैलीज. जो वैलीज थोड़ा शैलो है उसमें ज़्यादा फ्लो करता है पेनिनसुलर रिवर्स. द हिमालयन रिवर्स फॉर्म रिवर मियंडर्स एंड ऑफन चेंज इट्स कोर्स. हिमालयन रिवर्स अपना पानी का इतना फ्लो के लिए वो ऑफन इट चेंजेस इट्स कोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिवर. पेनिनसुलर रिवर फ्लो मोर और लेस स्ट्रेट कोर्स एंड डू नॉट चेंज देयर कोर्स. स्ट्रेट ही फ्लो करते हैं. दिस रिवर्स आर यूजफुल फॉर इरीगेशन एंड नेविगेशन. हिमालयन रिवर्स आर यूजफुल फॉर इरीगेशन एंड नेविगेशन.
पेनिनसुलर रिवर आर नॉट मच सुइटेड, मतलब ना नहीं है कि वहाँ पर इरीगेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना सुइटेबल नहीं है फॉर इरीगेशन एंड नेविगेशन. Himalayan river flow across the Yangfall mountains and still in a youthful age. Himalayan river Yangfall mountains के थ्रू फ्लो करता है और बहुत यूथफुल एज में भी है, अभी बहुत यंग एज में भी है. बट पेनिनसुलर रिवर तो बहुत ओल्डेस्ट है, हमको पता है. पेनिनसुलर रिवर हैज़ बीन फ्लोइंग इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड एंड हैव रीच्ड मैच्योरिटी. बहुत मैच्योरिटी हो गया पेनिनसुलर रिवर को, मतलब उसका एज ज़्यादा है, बहुत दिन पहले क्रिएट हुआ, हिमालयन के भी पहले पेनिनसुलर. द रिवर्स रिप्रेजेंट, लेकिन हिमालयन भी बहुत पहले क्रिएट हुआ, लेकिन हिमालयन अभी भी यंगफॉल माउंटेन्स अभी भी मतलब फ्लो ज़्यादा है, रिवर्स यंग है अभी भी. और रिवर यंग मतलब ये थोड़ा फनी एक आयरनी है, लेकिन यंग मतलब कि वो अभी भी मतलब इन द फ्लो है. पेरिनल रिवर भी इन द फ्लो है, बट इन कंपेरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू हिमालयस. हिमालयन रिवर रिप्रेजेंट एंटीसीडेंट ड्रेनेज, हमने पढ़ा था पहले, बट पेनिनसुलर रिवर रिप्रेजेंट कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज. द हिमालयन रिवर फॉर्म big deltas. The Ganga Brahmaputra delta is the largest in the world. The Peninsular river form comparatively smaller deltas. Narmada and Tapi form estuaries. Estuaries मतलब mouth of the river, जहाँ से river खुलता है. So that's all. We have covered the chapter of the drainage system and the examination corner. You need to do the examination corner, which is very important. तो आप try कीजिए, अगर नहीं होगा तो you can comment me down below. I will give your answer. बहुत easy, हमने जो पढ़ा, जो chapter में पढ़ा वही लिखा हुआ है कहाँ पर, एग्जामिनेशन कॉर्नर में. आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको टॉप क्वेश्चन देखना पड़ेगा, टॉपिक सर्च करके आपको आंसर पढ़ना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल. वी हैव कवर्ड द ड्रेनेज सिस्टम और चैप्टर 4 ऑफ जियोग्राफी. एक टिक दे देते हैं जो अभी टॉपिक हमने कवर किया. एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन रिवर सिस्टम, द ड्रेनेज रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. सो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आपको समझने में, कहीं पर भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं. आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव द रिप्लाई. So thank you, and that's all for today. Till you have watched the video at the last, please comment me down who have watched the video till the last, and hope you enjoyed, hope you learned a lot about the drainage system of India. So please do subscribe to my channel if you are new, and if you are already watching my videos then and you haven't subscribed, that's not a fair deal. So please do. बहुत अच्छा रहिए. कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे से कमेंट में बात कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. और शेयर कीजिए ये वीडियो जिसको भी ज़रूरत है फर्दर, मतलब इस बोर्ड तक सीमित नहीं है, आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाला है या कुछ भी रिलेटेड थिंग्स है तो आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं एज यू इफ़ यू विश टू. बाय बाय.